Hello, young champs. Welcome to Magnet Brains. My name is Tess Anajos, and we are going to start off with a new poem today. And what is the name of your poem? Hiawatha. It is not Hiawatha, ठीक है? Hiawatha नहीं बोलना उसको. It's Hiawatha, ठीक है? Hiawatha, and it's written by H.W. Longfellow. H.W. Longfellow. You can find a lot of poems written by H.W. Longfellow. He is a very famous poet. एक बहुत ही फेमस पोइट थे वो, एंड उनकी बहुत सारी पोएम्स आपको मिल जाएंगे. हायवाता का भी एक छोटा सा पोर्शन ही है आपके पास. इट्स अ वेरी लॉन्ग पोएम. जो एक्चुअल पोएम है वो बहुत लंबी है, ठीक है. सो हायवाता कौन था जानते हो? ही वॉज अ रेड इंडियन बॉय. नॉट इंडियन, हम लोग वाला इंडियन नहीं. रेड इंडियंस आर अ कम्युनिटी. जैसे आदिवासी लोग होते हैं ना, वैसे रेड इंडियंस करके एक कम्युनिटी थी लोगों की, पहले थी. अब तो बहुत कम हो गए हैं, अब शायद ही कहीं होंगे. वो लोग जंगल में रहते थे, ट्रीज पे उनके घर होते थे, एनिमल्स के साथ रहते थे, एंड दे हैड अ लॉट ऑफ सुपरस्टिशंस, बिलीव्स. लाइक वो लोग के हिसाब से सारे एनिमल्स के पास स्पिरिट होती है, एंड वो स्पिरिट्स जो है वो जंगल में रहने वालों की प्रोटेक्शन करती है. सारे जो ट्रीज़ हैं उनमें कोई ना कोई गॉड होता है. ऐसे बहुत सारे बिलीव्स रहते हैं उन लोगों के. यू मस्ट हैव सीन टॉम एंड जेरी, तो देखते हो ना. टॉम एंड जेरी में किसी एक एपिसोड में, मुझे याद नहीं कौन सा, जेरी एक फेदर्स वाला हैट लगा के यहाँ पे फेस पे ब्लैक मार्क्स करके घूमता है. दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन साइन ऑफ रेड इंडियंस. उनकी हैट्स ऐसी होती है, उनका सिर पे एक बैंड, एंड देन ऐसे फेदर्स. पोकाहंटर्स पता है? दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ दैट, ठीक है. वो लोग जंगल में रहते हैं, एनिमल्स के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती रहती है. वो उनका हर काम जंगल में ही होता है, ठीक है. सो ही वॉज अ रेड इंडियन बॉय, लिटिल रेड इंडियन बॉय. चलो वील स्टार्ट ऑफ विद द पोएम. दिस इज नॉट द पोएम, ठीक है. दिस इज अबाउट हायवाता. Hiawatha was a young red Indian boy, ठीक है. वो एक रेड इंडियन बॉय था. रेड इंडियन इज द कम्युनिटी. He lived with his old grandmother Nokomis. Nokomis was his grandmother. उसकी grandmother थी, उनका नाम था Nokomis. In a wigwam. Wigwam क्या होता है? It's a tent, a cloth tent. ऐसा, ठीक है. This is a wigwam. जंगल के लोगों के पास बंगला तो होगा नहीं, राइट. सो ही यूज टू लिव इन अ विगवैम. विगवैम इज अ टेंट, अ क्लॉथ टेंट, ट्रायंगल शेप के. नोकोमिस टॉट हायवाता अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. नोकोमिस ने हायवाता को अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वंडर्स होते हैं, उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज बताई थी. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, the insects, the birds, the animals and many other things. हायवाता को नोकोमिस ने अपने आसपास जितनी भी चीज़ें थी उन सब के बारे में कुछ ना कुछ बताया था. किस किस के बारे में? स्टार्स, ट्रीज, रिवर्स, लेक्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है. इन सब के बारे में नोकोमिस ने हायवाता को बताया था. हायवाता grew up to love them all. He could talk to birds and animals and they to him. And जो हायवाता था, he had a special power. What? He could talk to animals and birds. वो animals and birds से बात कर सकता था, वो उनकी बातें समझ सकता था, and जो animals थे वो भी उसकी बात समझ सकते थे, है ना. स्पेशल पावर ही हुआ. So this is about Hiawatha. Now we'll start off with the poem. Then the little Hiawatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they build their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whene'er he met them, called them Hiawatha's chickens. Of all beasts he learned the language, learned their names and all their secrets, how the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeers ran so swiftly,
why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brothers. Right? So that is your poem. Now, did you see कि बाकी poems की तरह बहुत सारा rhyming वो सब नहीं है इस poem में. Why is it so? Because it's an old poem. The English used in this is old. ठीक है, अभी का जो स्टार कार फार ऐसे राइम्स नहीं है इसमें, है ना, तो पोएम वाली फीलिंग नहीं आ रही. बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स ऑफ H.W. Longfellow. ठीक है, नाउ वील स्टार्ट ऑफ विद द एक्सप्लेनेशन. देन द लिटिल Hiawatha learned of every bird its language. Now Nokomis ने Hiawatha को डिफरेंट बर्ड्स, एनिमल्स, रिवर्स, लेक्स सबके बारे में बताया था. एंड Hiawatha could talk to them. Hiawatha इन सब से बात कर सकता था. सो उसने सारे बर्ड्स की लैंग्वेजेस सीख ली. डिफरेंट बर्ड्स की डिफरेंट लैंग्वेज होगी शायद. सो उसने सारे बर्ड्स की लैंग्वेज सीख ली एंड वो उनसे बात करता था, उनके सारे सीक्रेट्स जान लेता था. हाउ दे बिल्ड, दे learned their names and all their secrets. सबके नाम रखे हुए थे उसने, उनकी बातें पता थी, उनके सीक्रेट्स पता थे. How they built their nests in summer. वो समर में कैसे अपना घर बनाते थे, समर में क्यों बनाते थे, एंड विंटर में कहाँ चले जाते थे. Where they hid themselves in winter. और विंटर्स में ये लोग क्यों छुप जाते थे. यू नो, कुछ एनिमल्स होते हैं, समर के टाइम में दे कम आउटसाइड एंड ड्यूरिंग विंटर्स दे हाइबरनेट. मतलब विंटर्स के टाइम पे अपनी एनर्जी सेव करने के लिए वो लोग छुपे रहते थे, अपना खाना वगैरह सब सेट करके दे हाइड देमसेल्फ. और सबसे 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 कॉमन एग्जांपल कौन है, बेयर, अपना भालू होता है ना, वो समर के टाइम में बाहर आता है, विंटर के टाइम में इट हाइबरनेट्स इटसेल्फ. ठीक है. सो टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम. एंड जब भी वो इन सब से मिलता था वो इन सब से बातें करता था. Call them Hiawatha's chicken. Call them Hiawatha's chicken. Chicken क्यों, मुर्गी वाला चिकन नहीं है ये, दिस इज बर्ड्स के बच्चे. ठीक है, कोई भी बर्ड हो उसके बच्चे. सो द फर्स्ट पैरा गोज लाइक, Hiawatha ने नोकोमिस के कहने के बाद सारे बर्ड्स के लैंग्वेजेस सीखे. उसके बाद उसने इन सब से बातें की, उनके नेम्स जाने, उनके सीक्रेट्स पता थी उसको. उसने इनसे ये पूछा कि वो समर में कहाँ अपने नेस्ट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, विंटर्स में ये लोग कहाँ छुप जाते हैं. एंड फिर एंड टॉक टू देम वेन एवर ही मेट. ओके, ये क्या है, वेनेर मतलब यू रिमेंबर हमने लास्ट टाइम बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स किए थे. सो दिस इज सो when ये है when ever. ठीक है, जो एपिस्ट्रॉफी है वो वी की जगह पे लगा है. सो वेन एवर. और जब भी ये इनसे मिलता था उनको क्या बुलाता था, Hiawatha's chicken. मतलब ये सब उसके चिकन है. चिकन यहाँ पे मुर्गी का बच्चा नहीं है, इट इज एनी बर्ड का बच्चा, कोई भी बर्ड का बच्चा. Of all beasts he learned the language, learned their names and secrets. Now पहले उसने birds की language सीखी, birds से मिला, birds की language सीखी, उनसे बात की. Now beasts, what are beasts? Beasts are animals. ठीक है, उस जगह पे कितने एनिमल्स थे, उन सब से भी वो मिला, उनसे बात की, उनके नाम जाने, उनके सीक्रेट्स भी जान लिए, उनकी लैंग्वेज सीख ली. हाउ द बीवर्स बिल्ट देयर लॉजेस. बीवर्स पता है क्या होते हैं, बीवर्स देखे आपने, बीवर्स ये हैं बीवर्स. हैव यू सीन दैम, बीवर्स देखे, यहाँ तो नहीं देखे होंगे, मतलब टीवी में या फिर फ़ोन में, मतलब नेट में देखा होगा. उनके टीथ बहुत शार्प होते हैं, ऐसे बाहर खरगोश की तरह बाहर निकले होते हैं, एंड वुड को कट करते रहते हैं. ये लोग पानी में रहते हैं, पानी में मतलब फुल टाइम पानी में नहीं रहते, यूजुअली पानी के आसपास ही होते हैं इनके घर. ठीक है, दे आर स्मॉल रॉडेंट्स.
बहुत बड़े बड़े जानवर नहीं है, पिद्दू पिद्दू जानवर है, ठीक है। एंड दे ऑलवेज लिव इन अ फैमिली, उनकी फुल फैमिली होती है। सो हाउ डू बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, एंड इनकी एक स्पेशलिटी होती है, वो घर बनाते हैं अपना, घर वाला घर नहीं, बट अ स्मॉल एरिया टू स्टे। जैसे जो बर्ड्स होती हैं वो नेस्ट बनाते हैं ना, वैसे ही बीवर्स अपने लिए छोटे छोटे घर बनाते हैं। एंड देयर होम्स आर नोन एज लॉजेस। रिवर के साइड में, लेक के साइड में, मशी एरिया में ये लोग अपना घर बनाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड लॉजेस। Where the squirrels hide their acorn. Acorn, आइस एज देखा है, उसमें वो जो छोटा सा भागने वाला चीज होता है ना, वो जो भी स्क्विरल जैसा दिखता है, उसके हाथ में एक नट होता है ना, ऐसा। दिस इज एकॉर्न, दिस इज एकॉर्न, ठीक है। सो स्क्विरल अपना एकॉर्न कहाँ छुपाता है? हाउ द रेनडियर्स रैन सो स्विफ्ट। रेनडियर्स क्या होते हैं? बारहसिंगा, बड़े बड़े डियर्स होते हैं, उनके बड़े बड़े सींग होते हैं रेनडियर्स के, ऐसे पेड़ जैसे, पेड़ का ब्रांचेस जैसे। ऐसे होते हैं उनके सिर पे, आपने देखे होंगे। सो ही उनसे ये सीक्रेट भी जान लिया कि ये लोग इतना तेज कैसे भाग सकते हैं। वाई रैबिट वॉज सो टिमिड। रैबिट को देखा है आपने, बहुत शर्मीले से होते हैं, वो ज़्यादा ऐसे हंगामा करने वाले जानवर नहीं है, बहुत शर्मीले से चुपचाप रहने वाले हैं, ठीक। टिमिड मीन्स शाई, शर्माने वाला, ठीक है। टिमिड इज शाई। स्विफ्टली, स्पीड में, बहुत तेज। और कोई है वर्ड? नहीं ना। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम। वो इन सब से बातें करता था जब भी वो उनसे मिलता था। एंड कॉल्ड देम हाइवातास ब्रदर्स। एंड जानवरों को वो क्या बोलता था? हाइवातास ब्रदर्स। बर्ड्स को क्या बोलता था? हाइवातास चिकन्स। एंड एनिमल्स को हाइवातास ब्रदर्स, ठीक है। सो BEAST बीस्ट, यहाँ पे एनिमल्स। LANGUAGE लैंग्वेज, भाषा। LANGUAGE लैंग्वेज। देन सीक्रेट, SECRETS, SECRETS। बीवर्स, BEAVERS, बीवर्स, BEAVERS, बीवर्स। स्क्विरल्स, SQUIRRELS, 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 squirrels. Reindeer, REINDEER, REINDEER। रेनडियर है बट RAIN नहीं है, ओके। देन स्विफ्टली, SWIFTLY, स्विफ्टली। TIMID, timid, शर्माना। हाइवाता, HIAWATHA। यहाँ पे कोई था वर्ड? SUMMER, summer। WINTER, winter, right? So that was your poem. So Hiawatha means he who makes river. हाइवाता नेम का मतलब होता है he who makes rivers, ठीक है। द पोएम इज अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल रेड इंडियन बॉय Hiawatha who lives with his grandmother. He used to talk to different animals and birds that were found around him. He used to learn their language and know their lifestyle. He then would give them new names, right? So Hiawatha is a young रेड इंडियन बॉय ना, छोटा सा रेड इंडियन बॉय है। एंड ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंडमदर। कहाँ रहता था? विगवैम, विगवैम, राइट। ही यूज्ड टू लिव इन अ विगवैम। विगवैम में रहता था, एक टेंट, ठीक है, क्लॉथ टेंट, ट्रायंगल शेप में रहते हैं। सो वहाँ रह के उसकी जो ग्रैंड मदर है, शी यूज टू टेल हिम अबाउट डिफरेंट wonders around them. Why wonders? Nature is always a wonder, है ना, सही बात है। नेचर में कोई भी चीज़ हो, इट इज़ वंडरफुल।
ट्री कैसे ग्रीन है, इतने लंबे क्यों हैं, उनको कैसे पता कि उनको ऊपर की तरफ ही उगना है, बर्ड्स जो है वो कैसे मैनेज करते हैं सारा दिन अपने आप को. सो इट्स ऑलवेज अ वंडर. स्टार्स क्यों चमकते हैं, है ना, सब कुछ इज अ वंडर. सो शी यूज्ड टू टेल हिम अबाउट द डिफरेंट वंडर्स दैट आर फाउंड अराउंड हिम, राइट. सो Hiawatha had a special power. He could understand what the birds say, what the animals say. He could talk their language. So he learned different birds and animals languages. He used to talk to them. He used to ask for their names. He used to ask for their secrets, and then he would call them Hiawatha's chickens and Hiawatha's brothers. Animals were called Hiawatha's brothers. Birds were called Hiawatha's chicken. ठीक है? Anajos, and we are doing today the exercises for Hiawatha, right? We are doing the exercises for Hiawatha. And do you remember the poem? Poem याद है आपको? Hiawatha was a little red Indian boy and he lived with his grandmother. वो अपनी grandmother के साथ रहता था, and his grandmother used to tell him different stories about the wonders of the world. And what are the wonders in the world? Stars, trees, animals, birds, rivers, mountains, सब कुछ. Nature का हर चीज़ is a wonder. So grandmother used to tell him stories about these things, and he had the special talent of talking to animals. वो animals का, birds का language सीखता था, and he could talk to them, and they used to reply him. वो उनसे उनकी सीक्रेट्स जान लेता था, उनके नेम्स जानता था, वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, एवरीथिंग. एंड बर्ड्स को वो क्या बोलता था? Hiawatha's chickens, Hiawatha's chickens. एंड एनिमल्स को वो क्या बोलता था? Hiawatha's brothers. ठीक है? सो दिस वॉज Hiawatha. ठीक है? Hiawatha को नेचर के साथ हर चीज़ रिलेटेड बहुत अच्छी लगती थी. Right? So today we'll be starting off with our exercises, and the first thing you have is your new words. Wigwam, W-I-G-W-A-M, wigwam. This is a wigwam, a cloth tent, triangle shape में cloth tent, used by the people who live in forests or villages, है ना. ठीक है, बहुत पहले tribal people जो होते हैं वो use करते हैं. This is a wigwam, W-I-G-W-A-M, wigwam. Second is beavers. Beavers are small rodent animals. They live in the lakes, rivers and marshy land. ठीक है, ये है beavers. चूहे जैसे दिखते हैं लेकिन थोड़े बड़े हैं. ठीक है, B-E-A-V-E-R-S, beavers. Next is acorn. This is an acorn. Ice Age में देखा है ना? That is an acorn. It's a fruit. Human के लिए नहीं है. It's very hard seed. यूजुअली स्क्विरल्स या फिर जो ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स हैं ना फॉरेस्ट के, वो लोग इसको खाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज R-E-I-N-D-E-E-R, रेनडियर्स. रेनडियर्स आर दीज बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े डियर्स. इनफैक्ट काफ़ी बड़े होते हैं, बहुत हाइटेड होते हैं, एंड उनके सिर पे सींग होते हैं इन दिस शेप. जो वेल ग्रोन अप रेनडियर होता है, जो सबसे बड़ा मतलब फुल ग्रोन अप है, उनके सेइंग अगर आप काउंट करो तो यूजुअली इट इज़ 12. यूजुअली इट इज़ 12. हिंदी में रेनडियर्स आर कॉल्ड बारासिंगा. बारासिंगा बोलते हैं उसको. एंड इट इज़ अ फैक्ट. अगर आप काउंट करके देखोगे यू विल फाइंड 12, एटलीस्ट 12 ऑफ द हॉर्न्स. मतलब उनका जो पार्टीशन है वो एटलीस्ट 12 होता है. नेक्स्ट इज T-I-M-I-D, timid. Timid is shy. Timid is shy. शर्माना. बहुत ऐसे बहुत ओपन पर्सन नहीं, थोड़ा शर्म आती है उसको, ऐसा. राइट? सो दीज आर योर न्यू वर्ड्स. विगवैम, बीवर्स, एकॉर्न, रेनडियर्स एंड timid. ओके. Who was Hiawatha? Hiawatha कौन था? Hiawatha was a little red Indian boy. Okay, red Indian capital letter में आएगा. Why? Because it's a community. ठीक है, red Indian capital letters में आएगा. Hiawatha was a little red Indian boy. Okay. Next, who was Nokomis?
नोकोमिस कौन थी? Nokomis was Hiawatha's grandmother. Who was Nokomis? Nokomis was Hiawatha's grandmother. Hiawatha की grandmother थी. ठीक है, Nokomis was Hiawatha's grandmother. Hiawatha's. ठीक है. Next, what did he learn about the birds? उसने birds के बारे में क्या सीखा था? He learned their language and names, right? He learned their language and names. He also learned how they build nests in summer and where they hide in winters, right? Birds से उसने क्या क्या सीखा? He learned their language, their names, and how they built their nest, and in winters where they go and hide themselves. Okay, so these are the things that he learned about the birds. Okay, and what did he call the birds? He called them Hiawatha's chicken. Next, what secrets did he learn about the beasts? Beasts is animals. He learned their language and names. ये same रहेगा, okay? He also learned why rabbits were timid, where the squirrels hide their acorns, how beavers make homes, and how the reindeers run so fast. Okay, so थोड़ा लंबा आंसर हो गया ना, थोड़ा लंबा आंसर है, कोई बात नहीं, पोएम याद होगा तो you can write this. So what did he learn? He learned their languages and names, and how the rabbits, why the rabbits were so shy, how the reindeers run so fast, how the beavers make their homes, and where the squirrels hide their acorn. Right? 4 चीजें हैं आपके पोएम में, second para में. You have to write all 4 of them. Okay? ठीक है ना? थोड़ा बड़ा आंसर है, but you can write it. Next. This is a park where children talk to different animals and birds. Write 4 sentences about the picture. Use capital letters where required. Complete sentence with the punctuation marks. Okay. Now, can you see the picture? There's a boy, there are animals, there is grass, blue sky, है ना? इतनी सारी चीजें हैं. So, how will you make sentences?
You want to give a name to the boy? कुछ देना है नाम कि we'll keep as children only. Okay, we'll start off. I know a magic park. The animals in the park can talk to children. There are ducks, parrots, and sparrows. There. You can also see rabbits and deers. Okay, now you just have to write 4 sentences. It's not necessary that you have to write the same sentences that I am writing. मैम सिर्फ आपको बताने के लिए sentences लिख रही है, ज़रूरी नहीं है कि आपको रट्टा मार के यही करना है, ठीक है? You can write your own sentences. You just have to describe this picture. Okay, you just have to describe this picture. Now, what all have we written? I know a magic park. I is always capital. वो sentence के बीच में होगा तो भी capital ही होगा, ठीक है? And then full stop because the sentence ends here. Then after the full stop, you start off with a capital letter. The animals in the park can talk to children. Full stop. It's a sentence. One sentence ends there, so full stop. Then again capital. There are ducks, parrots and sparrows. 3 different चीज़ें हैं, इसलिए 2 के बीच में कॉमा लगेगा, right? And last वाले से पहले and. Okay? Again full stop. Capital letter. You can also see rabbits and deers. Again full stop. Did you understand? You just have to make a paragraph जिसमें full stops, capital letters, commas ये सब होने चाहिए. Okay? Next is where do they live? कहाँ रहते हैं? सबको नाम तो पता है. Birds live in. Birds कहाँ रहते हैं? Nest. Rabbits in hole and beavers in lodges. ठीक है? S नहीं आएगा. Okay, birds live in nest, rabbits live in hole and beavers live in lodge. ठीक है? Understood? Next is describe Hiawatha, his home and friends in 10 lines. So, at the starting of the chapter, you have few lines about Hiawatha. You can take help from there. Hiawatha is a little red Indian boy. He lived with his grandmother. They lived in a wigwam. Hiawatha had a lot of friends in the jungle.
in the forest. He could talk to them कौन कौन से एनिमल्स थे? बीवर्स, रैबिट्स, squirrels and reindeers were his friends. They used to tell him different secrets. Hiawatha called them Hiawatha brothers. Okay, now this is how you are supposed to write. Just if you want, you can write it continuously or you can write it in points. Okay, you just have to write about Hiawatha, who all were his friends. You have to write about his grandmother, his home, what he could do with the animals, what all they talked about. Similarly, he also had birds as his friends. What did they talk to him? What secrets did they tell him? Okay, you just have to include all that. You just have to write 10 lines. You have to write 10 lines. You can write anything you want. Okay? What did Hiawatha love? What did Hiawatha love? Any specific thing? कोई specific चीज थी? Hiawatha grew up to love them all. So, what did he love? He loved the stars, trees, insects, birds, and animals. So, what will you write? Hiawatha loved the nature, the stars, birds, animals, sky, and everything in it. So, what did he love? He loved the nature. And उस नेचर में जो जो चीज़ें हैं वो सब he loved. ठीक है? So Hiawatha loved the nature, the stars, birds, animals, skies, and everything in it. ठीक है? Match with and write the complete sentences below. Whenever, whoever, wherever. Whenever मतलब जब भी. Whoever जिसने भी. And wherever कहीं भी. ठीक है? So this is time, this is person, and this is place. Hodgepodge हो गया? Okay, I'll change it. When, who, and where. When is for time, who is for person, and where is for place. ठीक है? Now see. Time. Whenever I am hungry, I eat. जब मुझे भूख लगती है मैं खाना खाता हूँ. Now whoever, person की बात होगी. Whoever comes first wins. जो भी first आएगा वो जीतेगा. Wherever, जगह. Wherever I go, I have friends.
right? Wherever I go, I have friends. Whenever I am hungry, I eat. Whoever comes first wins. Okay, now you have to rewrite the sentence. You can write it, right? Whenever I am hungry, I eat. Okay, similarly you have to write whoever comes first wins. Wherever I go, I have friends. Okay, समझ में आया? कर सकते हैं? You can do it, right? We'll do the second one then. Whoever comes first wins. Okay, whoever comes first wins. Full stop. You can do it, right? Next is complete the following stories by using an appropriate word from the box. Your words are my, his, he, your. My मेरा, his उसका, he वो, your तुम्हारा. ठीक है? So Ram was a farmer who wanted to sell his goat and sheep. उसकी goats और sheep. So he went to the market. There sold all उसके animals, his animals, to a rich man and got a lot of money. When he was going back to the village, 3 thieves stopped him. Stop! Give us all your money. तुम्हारे सारे पैसे हमें दे दो. Ram was very clever. He said, I'll give my money to the strongest of you. On hearing this, the thieves started fighting amongst themselves. Ram slipped away quietly. So, there's a farmer. He has goats and sheep. वो अपने sheeps को बेचने गया. उसने अपनी sheeps बेच दी. पैसे लेके वापस आ रहा था. कुछ गुंडों ने उसको रास्ते में रोक के बोला तुम्हारे सारे पैसे हमें दे दो. उसने कहा मैं अपने सारे पैसे तुमको दे दूंगा अगर तुम में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसको. एंड वो आपस में लड़ने लगे. सो दैट इज द स्टोरी. ठीक है, यू अंडरस्टूड वेयर वी यूज्ड माई, ही, हिज, योर्स. समझ में आया ना? सिटिंग ऑन अ ट्री अ क्रो वॉज एंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड. एक ट्री के ब्रांच पे बैठ के एक क्रो ब्रेड खा रहा था. अ हंग्री फॉक्स वांटेड टू हैव दैट ब्रेड. नीचे से एक हंग्री फॉक्स आया, उसको वो ब्रेड चाहिए था. ही सेड वेरी स्वीटली, उसने बहुत प्यार से बोला, डियर ब्रदर, आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है तुम्हारा वॉइस, सो योर वॉइस इज वेरी स्वीट, प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, प्लीज मेरे लिए एक गाना गा दो. The foolish crow opened his beak. Foolish crow ने अपना मुंह खोला. And the piece of bread fell. उसके मुंह से ब्रेड गिर गया. The fox picked it up in his mouth. और फॉक्स ने क्या किया? उसने जल्दी से उसे अपने मुंह में ले लिया. And ran away. And वो वहां से भाग गया. ठीक है? Now again you have some words जिनके spellings अलग है but the pronunciation is same. So you have to write, you have to select and write. The bird sits on a bow. The bird sits on a bow. B-O-W is झुकना, bow करना, या फिर जो आपके टाई के यहाँ पे bow होता है ना, that. The squirrel has a long, squirrel की long क्या होती है? tail या tail? Tail. T-A-L-E tail is story. T-A-L-E tail is story. I have to leave at 2. मुझे 2 o'clock को जाना है. So I have to leave at 2. This sum is right. दूसरा वाला right कौन सा है? लिखना. I can dash the bird's song. I can hear
सुन सकता हूँ, HERE यहाँ वाला हियर. डू यू डैश अ सीक्रेट, डू यू नो अ सीक्रेट, जानते हो, NO इज नो. द किंग सिट्स ऑन अ थ्रोन, राजाओं का चेयर इज कॉल्ड थ्रोन. THROWN इज फेंकना, थ्रोन. ही इज आवर स्कूल प्रिंसिपल. ओके, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इज, ये वाला जो प्रिंसिपल इज किसी भी चीज का कोई रूल, ठीक है, कोई रूल होता है या किस वजह से हो रहा है, एक रीजन देना, दैट इज प्रिंसिपल. ठीक है, या फिर इफ आई से कि आई एम ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट, दैट इज माई प्रिंसिपल. कोई भी एक मोटो अपनी लाइफ में अगर रखते हैं, दैट इज योर प्रिंसिपल. एंड दूसरा वाला प्रिंसिपल है स्कूल का प्रिंसिपल. ओके, so and we are starting off a new story today, that is the scholar's mother tongue. The scholar's mother tongue. Who is a scholar? Scholar is a person who is very witty, who has a lot of wisdom, who is a lot of learned. मतलब एक ऐसा person जिसको बहुत ज्ञान है. A teacher, someone who teaches. ठीक है, सो अ स्कॉलर इज समवन हु इज़ वेरी लर्नड, हु इज़ वेरी नॉलेजेबल, हु हैज़ अ लॉट ऑफ विजडम. वो उनको हर चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज होता है. एक ऐसा पर्सन इज कॉल्ड स्कॉलर. सो द स्टोरी इज अबाउट अ स्कॉलर एंड हिज मदर टंग. व्हाट इज मदर टंग? मदर टंग इज आपका स्टेट लैंग्वेज. स्टेट लैंग्वेज इन द सेंस हिंदी इज़ योर नेशनल लैंग्वेज. वैसे ही आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का लैंग्वेज इज योर मदर टंग. लाइक इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, मराठी विल बी योर मदर टंग. इफ यू आर फ्रॉम केरला, योर मदर टंग विल बी मलयालम. इफ यू आर फ्रॉम पंजाब, पंजाबी विल बी योर मदर टंग. ठीक है, सो जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का लैंग्वेज इज योर मदर टंग. ओके, सो द स्टोरी इज taken from an episode from अकबर बीरबल. अकबर बीरबल को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं ना. इतनी सारी स्टोरीज हमने पढ़ी हैं अकबर बीरबल के बारे में. सो द स्टोरी इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टोरीज, राइट. सो वील मूव ऑन टू द स्टोरी. अ लर्न्ड पंडित once visited the court of अकबर. एक बार एक लर्न्ड पंडित, नाउ लर्न्ड पंडित इज अ स्कॉलर, जिसको बहुत ज्ञान है किसी भी चीज़ के बारे में, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल. वो एक बार अकबर के दरबार में आया. कोर्ट इज दरबार, इट इज़ नॉट द ऑर्डर वाला कोर्ट. ठीक है, दिस इज दरबार, जहाँ पे अकबर और उसके सारे डिसाइपल्स, सारे मिनिस्टर्स, ये लोग बैठ के बातचीत करते थे. दैट इज कोर्ट. सो एक बार एक पंडित अकबर के कोर्ट में आया. ही टोल्ड द किंग एंड हिज courtiers that he had mastery over many different languages. अब ये पंडित आते हैं and he says, महाराज मैं बहुत ज्ञानी हूँ. किस बात में? लैंग्वेजेस में. मुझे कई तरह की भाषाएं आती हैं. यहाँ पे जो बैठा कोई भी इंसान, मैं इतना अच्छा हूँ सारी भाषाओं में कि यहाँ बैठा कोई भी इंसान नहीं बता सकता कि मेरी मातृभाषा क्या है. What does it mean? Now, if you see साउथ इंडियंस, है ना, साउथ इंडियंस जब वो बात करते हैं तो एक स्लैंग होता है उनके बोलने में, एक एसेंट आता है, राइट. बहुत मजाक उड़ा के भी इस चीज़ को दिखाते हैं. कभी कभी टीवी में देखा होगा, साउथ इंडियंस जब इंग्लिश बोलते हैं ना, वो एसेंट में ठीक नहीं, इट वुड बी मजाक उड़ाने जैसा होगा, इसलिए ऐसे करना ठीक नहीं है. आपको पता है ना, अब जब जैसे पंजाबी लोग अगर इंग्लिश बोलेंगे तो उनका एक डिफरेंट टोन आता है. सो यू कैन मेक आउट कि हाँ ये शायद पंजाबी है. कोई साउथ इंडियन, कोई मलयाली, कोई तमिलियन आपसे बात करेगा तो यू कैन मेक आउट, हाँ ये पक्का साउथ इंडियन है ना. क्यों? बिकॉज वो साउथ इंडियन लैंग्वेज बोल के वो उनका मदर टंग है, तो उनके बोलने में वो ट्यून आ जाता है. ठीक है, वैसे ही ये पंडित क्या बोलता है, मैं बाकी भाषाएं इतनी अच्छी तरह बोल सकता हूँ कि कोई बता ही नहीं सकता कि मेरी मदर टंग क्या है.
ठीक है, ऐसा। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बहुत फ्लुएंटली बोल लेता था, मतलब कहीं नहीं रोक टोक नहीं, बिल्कुल एकदम पानी जैसा। He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. So वो इतना अच्छे से सब लैंग्वेजेस बोलता था कि कोई बता ही नहीं सकता था कि इसका बेसिक लैंग्वेज क्या है। He challenged everybody at the court to name his mother tongue. उसने उस कोर्ट में जितने लोग बैठे थे उनको चैलेंज किया कि मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि तुम में से कोई भी मेरा मदर टंग नहीं बता सकता। When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल। जब कोई भी नहीं बता पाया तब बीरबल ने बोला, ठीक है महाराज, हम बताएंगे तुम्हारा मदर टंग क्या है। That night, बीरबल went quietly to the पंडित's room when he was sleeping. उस रात को जब पंडित सो गया आराम से, बीरबल चुपके से पंडित के रूम में गया। He whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. Whispered, कानापुसी कहते हैं ना, पस, 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 वो चुपचाप गया, उसने पंडित के कान में कुछ फुसफुसाया एंड एक फेदर से, फेदर क्या होता है, पंख, पंख से उसके कान में गुदगुदी किया। टिकलिंग इज गुदगुदी करना। The Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. अब पंडित तो सो रहा था, अब नींद में कोई तुमको कुछ करे और आप अच्छी गहरी नींद में हो तो आप जल्दी से डर के मारे उठ जाओगे ना। यूजुअली क्या होता है, मम्मा बोल के उठते हैं। सो पंडित भी डर के उठा एंड उसने सडनली अपने मदर टंग में कुछ बोला। बीरबल केम टू द कोर्ट नेक्स्ट डे। अगले दिन बीरबल कोर्ट आया एंड टोल्ड एवरीवन दैट पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु। वो बीरबल कोर्ट में आया एंड उसने सुबह सुबह सबको बोला, सबको गुड मॉर्निंग वगैरह बोला। उसके बाद महाराज को बोला, महाराज पंडित जी का मदर टंग तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रुथ। पंडित को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उसने हाँ बोल दिया। उसने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं ये नहीं है, ठीक है, उसने हाँ बोला एंड यस, उसने एक्सेप्ट किया। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, देन अकबर ने बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, तुमको कैसे पता चला कि तेलुगु है। बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई प्रॉब्लम होता है, जब हम हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो फर्स्ट थिंग जो हमारे मुंह से निकलता है दैट इज़ योर मदर टंग। अगर आप कुछ भी बोलते हो तो आपके मदर टंग में ही निकलता है। लाइक फर्स्ट थिंग तो मम्मा, यूजुअली हम मम्मा ही बोलते हैं, है ना। जब भी डरते हैं, जब भी कुछ हो जाता है तो फर्स्ट थिंग यूड से इज मम्मा, अम्मी, मम्मी, माँ, है ना। इसके अलावा अगर यू आर स्पीकिंग समथिंग, अगर आप कुछ बोलोगे तो इट विल बी यूजुअली योर मदर टंग। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप डर गए और आप इंग्लिश में कुछ बोलने लगो, या फिर आप डर गए और हिंदी में कुछ बोलने लगो। इट विल every time it will be your mother tongue. So he also told the king how he had gone to the pandit's room at night to find out the truth. And उन्होंने किंग को ये भी बताया कि रात में वो पंडित के रूम में जाके कैसे उन्होंने फाइंड आउट किया कि तेलुगु उनका मदर टंग है, ठीक है। So that was your story. So how was it? The story is an episode from the famous Akbar Birbal tales. Once a pandit challenges Akbar that no one in his kingdom could find out his mother tongue, but Birbal uses his wit and finds out. The story tells us that whenever we are in danger or at the peak of any emotion, we speak our mother tongue. So, the story is about Akbar, Birbal and a pandit. अकबर के सभा में एक पंडित आता है एंड वो अकबर को बोलता है कि महाराज, मैं इतनी अच्छी तरह सब लैंग्वेजेस बोलता हूँ कि आप बता ही नहीं पाओगे कि मेरी मदर टंग क्या है। सो राजा बोलता है कि ढूंढो, इसकी मदर टंग बताओ। सब फेल हो जाते हैं। देन बीरबल आता है। बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने रात में चुपचाप जाके पंडित जी के रूम में गया एंड पंडित जी को नींद में डराया। उसने फेदर से उनको टिकलिंग किया और उनके कान में फुस 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 किया
तो वो डर के मारे उठे और उन्होंने अपनी मदर टंग में कुछ बोल दिया। नेक्स्ट डे जब कोर्ट में सब लोग आते हैं तब बीरबल ने अकबर को बताया कि पंडित जी का मदर टंग क्या है, तेलुगु है। कैसे पता? बीरबल ने समझाया कि जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, डर जाते हैं या पीक ऑफ कोई भी इमोशन, पीक ऑफ इमोशन मतलब किसी भी इमोशन का मैक्सिमम, एक्सट्रीम, ऐसे कंडीशन में हमारे मुंह से सबसे पहले हमारा मदर टंग में ही कुछ निकलता है। एंड व्हाट इज मदर टंग? द नेटिव लैंग्वेज दैट यू स्पीक। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का लैंग्वेज इज योर मदर टंग। सो डिड यू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स? कोई डिफिकल्ट वर्ड लगा? अ लर्न्ड पंडित, LEARNED, लर्न्ड मतलब बहुत ही पढ़े लिखे, ज्ञानी। Once visited the court of the Akbar, he told the king and his courtiers. Courtiers are the people in the court. People in the court. COURTIERS. Courtiers. That he had mastery. Mastery मतलब he had learnt a lot. Perfection था over many different languages. DIFFERENT. Different, अलग अलग languages. 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 The Pandit could speak many languages fluently. Fluently मतलब without any difficulty. Easily. FLUENTLY. Fluently. He was so fluent that one could not find out what his mother tongue was. He challenged. CHALLENGED. Challenged मतलब उन्होंने बोला कि कोई कर ही नहीं सकता, कंफर्म बोल दिया कि कोई कर ही नहीं सकता, मैं तुम लोग को चैलेंज कर रहा हूं कि कोई करके दिखा दो, ऐसा। In the court to name his mother tongue. When everyone failed, the challenge was taken up by Birbal. That night Birbal went quietly, 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 ठीक है, Pandit's room when he was asleep. He whispered, WHISPERED, whispered मतलब कान में धीरे धीरे बोलना, into the Pandit's ear and tickled it, TICKLED, गुदगुदी, TICKLED, tickled it with a feather, 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 पंख, ठीक है, पंख. The Pandit, half awake, cried out suddenly, 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 एकदम से, suddenly, and shouted, 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 चिल्लाना, words in his mother tongue. Birbal came to the court next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. The Pandit was surprised and accepted, 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 accept करना, मानना, the truth. King Akbar then asked Birbal, how did you find the truth? Birbal answered, in times of difficulty, DIFFICULTY, difficulty मतलब problem, मुसीबत के टाइम पे, a person speaks only in his mother tongue. He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. Okay, so and today we are going to do the exercises for our story, the scholar's mother tongue. Story याद है सबको? The story was about Akbar, Birbal and a scholar. Once a Pandit comes into Akbar's court and he claims that he knows almost all languages and he is so fluent with his languages that no one can tell what his mother tongue is. So everyone tries, everyone fails. Next, Birbal comes in. He says, I'll try. And that night, while the Pandit was sleeping, Birbal goes into his room quietly and he whispers something into the Pandit's ear and he starts tickling him. The Pandit, all of a sudden startled, gets up and he says something in his mother tongue. The next day in the court, Birbal tells Akbar that the Pandit's mother tongue is Telugu. And the Pandit says, yes, he's very right. Now Akbar asks him, how did he know that he speaks Telugu? Birbal tells him that whenever you are in difficulty or at the peak of any emotion, the first thing you say is the word in your mother tongue. So that is how he found out.
एक बार क्या होता है, अकबर और बीरबल के दरबार में एक पंडित आता है एंड वो पंडित क्या बोलता है, मैं इतनी सारी लैंग्वेजेस इतने अच्छे से बोलता हूँ कि कोई बता ही नहीं सकता कि मेरी मदर टंग क्या है। तो बीरबल बोलता है, बाकी सारे लोग जो वहाँ बैठे थे सब अपना अपना ट्राई करते हैं, सबका गलत हो जाता है। नाउ बीरबल आता है, वो कहता है कि मैं ट्राई करूँगा। उस रात को जब पंडित सो रहा था, बीरबल चाहता है एंड पंडित के कान में कुछ फुसफुसाता है एंड देन उसको गुदगुदी करता है एंड पंडित डर के मारे उठ के कुछ अपने मदर टंग में बोलता है। मदर टंग किसको बोलते हैं, जो आपका नेटिव लैंग्वेज है, आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट में जो लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज़ योर मदर टंग। सो नेक्स्ट डे जब कोर्ट में सब लोग आते हैं, बीरबल अकबर को बताता है कि पंडित जी का मदर टंग तेलुगु है। वो कहता है कि राइट, एकदम सही बोला। अकबर ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? तो बीरबल ने क्या बताया, जब भी तुम डर जाते हो या कोई प्रॉब्लम होती है या किसी भी इमोशन का सबसे एक्सट्रीम होता है, तो जो वर्ड तुम्हारे मुंह से निकलता है दैट इज़ यूजुअली इन योर मदर टंग। तब हम यूजुअली हमारा मदर टंग बोलते हैं। और रात में पंडित जी ने तेलुगु में बात किया था। सो this shows that whenever you are in difficulty or in fear or in any emotion, जब पीक होता है तब you tend to speak your mother tongue। तो आपके मुंह से गलती से ही सही बट मदर टंग ही निकलता है, ठीक है। सो we'll start off with the new words. First is MOTHER, mother, TONGUE, tongue। Mother tongue is your native language, जो लैंग्वेज आपके स्टेट में बोलते हैं, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि लाइक इफ आप पंजाबी है, आप पंजाबी हो एंड आप महाराष्ट्र में रहते हो, तो आप जिस स्टेट में रहते हो उसका मदर टंग आपका मदर टंग नहीं होगा। लाइक आप पंजाबी हो तो आपका मदर टंग पंजाबी है, चाहे आप केरला में रहो, चाहे आप महाराष्ट्र में रहो, चाहे आप गोवा में रहो। वैसे ही अगर आप एक केरलाइट है तो आपका मदर टंग मलयालम है, चाहे आप पंजाब में रहो, महाराष्ट्र में रहो या कहीं भी रहो, ठीक है। आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं उस स्टेट का लैंग्वेज इज योर मदर टंग। CHALLENGED, चैलेंज्ड, बेट करना कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, करके दिखाओ, चैलेंज करते हैं ना, दैट इज चैलेंज। CHALLENGED। टिकल्ड, TICKLED, गुदगुदी करना, TICKLED, टिकल्ड। नेक्स्ट इज इरिटेटेड, IRRITATED, गुस्सा दिला देना, परेशान कर देना, ठीक है, IRRITATED, इरिटेटेड। सो दैट वॉज योर न्यू वर्ड्स। नेक्स्ट इज हु केम टू अकबर्स कोर्ट, कौन आया था अकबर के दरबार में? A scholar came to Akbar's court। ओके, स्कॉलर रहने दो, आपको चैप्टर में पंडित है तो यहाँ पे भी पंडित ही कर दो। और पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट, फुल स्टॉप, ठीक है। अ पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। What did he claim to know? उसने क्या बोला कि मैं क्या कर सकता हूं? He claimed he could speak many languages fluently। Many languages so fluently that no one could tell what his mother tongue was।
सो व्हाट डिड ही से? ही क्लेम्ड, वो उसने बोला कि मैं इतनी सारी लैंग्वेजेस इतने स्पीड फ्लुएंटली बोल सकता हूँ कि कोई नहीं बता सकता कि मेरा एक्चुअल लैंग्वेज क्या है. ठीक है. सो ही क्लेम्ड ही कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस सो फ्लुएंटली दैट नो वन कुड टेल व्हाट हिज मदर टंग वॉज. ओके. नेक्स्ट, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी? उसे क्या चैलेंज दिया? He challenged if anyone could tell what his mother tongue was. उसने क्या चैलेंज दिया था? उसने चैलेंज किया सबको कि तुम में से कोई भी एक बता दे कि मेरा मदर टंग क्या है. ठीक है. सो ही चैलेंज्ड इफ एनीवन कुड टेल व्हाट हिज मदर टंग वाज. ओके. नेक्स्ट, राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी. फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, हा हा. सो व्हेन यू आर हैप्पी, what are the words that you say? Hooray, haha, great, yes. Then और कुछ? Great, yes, haha, hooray. Now what else can you say? जो बहुत खुश होते हैं, yippee, right? So these are the words that you use when you are very happy, right? So it's not necessary that you have to write these. It's an open question. You can write whatever you want. You can find out more words that you say while you are happy. You can write them. ठीक है. आप जब खुश होते हो आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, वो लिखना है. So it's not necessary. जो मैम ने लिखा है वही लिखना है. ठीक है. Now tick the right answer. I visited the court of Akbar means I visited. जब I visited बोलते हैं तो what does it mean? You live there, वहीं रहते हो. You came there for a short time, किसी से बस मिलने गए हो. You were born there, तुम वहाँ पैदा हुए हो. It means you come there to meet. ठीक है, बस किसी से मिलने आए हो. To imitate someone means, imitate करना means कॉपी करना, किसी की नकल उतारना. Tease someone, किसी का मजाक उड़ाना, या make someone angry, किसी को गुस्सा दिलाना. Imitate means to copy. Imitate means to copy. ठीक है. I visited means you just went somewhere and met someone. To imitate means to copy someone. Now look and fill the columns. One has been done for you. You have to add on ly. You have to add on ly. So quiet is quietly, fluent, fluently, fluently. Angry, angry. Okay, angry y पे खत्म होता है, so you will remove the y and put I. ठीक है. Sad, sadly. Fierce, fiercely. Gentle, gently. ओके. ई रिमूव हो जाएगा, y होगा तो y रिमूव होके I हो जाएगा, ई रिमूव हो जाएगा. ठीक है. छोटी छोटी चीजें just to remember. ठीक है. So fluently, fluently, angrily, angry, sadly same, fiercely, fiercly, gently, gently. Okay. Next, match the column with the words A and B. Okay. यहाँ पे जो words है
इनसे रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे हैं, ए और बी में रिलेटेड वर्ड्स है, यू हैव टू मैच देम. फर्स्ट इज किंग, चिल्ड्रन, पेशेंट, कोर्टियर्स, क्लाइंट, पैसेंजर्स, स्टूडेंट्स. कोर्टियर्स है ना, किंग के दरबार में जो लोग हैं. टीचर, स्टूडेंट, बस ड्राइवर, पैसेंजर्स. देन लॉयर, लॉयर्स के कौन होते हैं? क्लाइंट्स. एंड मदर, चिल्ड्रन. ठीक है, डन. किंग, कोर्टियर्स, टीचर, स्टूडेंट्स, डॉक्टर, पेशेंट्स, बस ड्राइवर, पैसेंजर्स, lawyers, clients, and mother, children. ठीक है, you have to match the words which are related. Now, play this game with a friend. Pick up what you want from any basket. Add an a or an before it. Can you see some words in the baskets? Rug, pillow, bed sheet, alarm clock, wall clock, wristwatch, apple, orange, banana, ice cream, bow, arrow, bat, ball, doll, waistcoat, long coat, raincoat, umbrella. ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं बास्केट्स में. You have to pick up any two things, right? You have to pick up any two things. You have to add a or an in front of them, and then you have to make sentences like this. Can I have dash, please? Yes, here you are. Can I have dash too? No, sorry, you can't have it. So first you have to ask, can I have one thing? कोई भी एक चीज. Then you will reply, yes, you can have. दूसरी बार you will ask again, can I have another thing? You have to say no. ठीक है? Let's do it. From the first basket we'll take rug and we'll take pillow. ठीक है, रग और पिलो लेते हैं. So, can I have a rug, please? Yes, here you are. Can I have a pillow too? No, sorry, you can't have that. Understood? कोई भी दो चीज उठानी है आपको, and then you have to add a or an with it, right? We'll do another one. Alarm clock, wristwatch, right? Alarm clock and wristwatch. Now, can I have alarm clock? A and the कहाँ लगता है? And कहाँ लगता है? Vowels के सामने. So, can I have an alarm clock, please? Yes, here you are. Can I have a wristwatch too? No, sorry, you can't have that. ठीक है? So A E I O U, A E I O U. इनके सामने क्या आएगा? एन. बाकी सबके सामने ए. ठीक है, एक और देखते हैं. लाइक हियर, एप्पल, एन एप्पल, ऑरेंज, एन ऑरेंज, बनाना, अ बनाना, आइसक्रीम, एन आइसक्रीम. नेक्स्ट, वेस्ट कोट, अ वेस्ट कोट, लॉन्ग कोट, अ लॉन्ग कोट, रेन कोट, अ रेन कोट, अम्ब्रेला, an umbrella. ठीक है, so when you write the sentence you will ask, can I have an apple, can I have an orange, can I have a banana, can I have an ice cream. ठीक है, so vowels के सामने you will be putting on an and other words के सामने you will put a. It's clear, right? Vowels तो पता है ना सबको. Next, how did Birbal find out about the Pandit's mother tongue? कैसे ढूंढा? At night, Birbal went to the Pandit's room and
whispered something into his ears. He also tickled the Pandit. The Pandit was startled and he spoke something in Telugu. ठीक है, इट इज अ कॉम्पोजिशन काइंड ऑफ आंसर, इसलिए बड़ा है. ठीक है. एट नाइट बीरबल वेंट टू द पंडित्स रूम एंड विस्पर्ड समथिंग इनटू हिज हियर. पहले बीरबल ने क्या किया, चुपचाप जाके सोते हुए पंडित के कान में कुछ फुसफुसाया. ही ऑल्सो टिकल्ड द पंडित. उसने पंडित को गुदगुदी भी की. एंड पंडित इतनी एकदम हैरान हो गया, डर गया. ही वॉज सो स्टार्टल्ड. The पंडित was startled and he spoke something in Telugu. and एकदम से उनके मुंह से तेलुगु में बातें निकली. क्लियर. थोड़ा सा बड़ा है देखने में, बट व्हेन यू राइट इट एज अ स्टोरी आपको इजीली आ जाएगा. स्टोरी आता है तो यू कैन इजीली राइट इट. ठीक है. आंसर बड़ा है, देख के डरने की जरूरत नहीं है. Now, suppose you are going on a camping holiday. What are the 4 most important things that you will carry? Choose from the attached balloon. Okay, there is a balloon and you have to find 4 things that are very important. किस लिए? आपके कैंप के लिए. आप कैंप जा रहे हो and you need those things. Any 4 important things. ठीक है? First is toolbox, radio, blanket, sewing kit, money, candle, football, the 5 values book, the guide to a happy life, box of matches, first aid kit, water bottles, food packets, jewels. क्या ले जाओगे? सबसे पहले तो water bottle, then first aid kit, then if camp is just for 1 day then food packets इतना important नहीं होएगा, फिर भी बॉक्स ऑफ मैचेस एंड व्हाट एल्स. कैंप है ऑब्वियसली, टूल्स, रेडियोस, मनी, कैंडल्स. नाइट कैंप हो सकता है, सो यू नीड बॉक्स ऑफ मैच. ओके, कैंडल. अगर बॉक्स ऑफ मैचेस है तो ऑब्वियसली तभी ले जाओगे जब आपके पास कैंडल्स हैं. तो कैंडल है ऑलरेडी. और क्या लेके जाना है? ओके, फूड हो गया. फूड. नाउ ईदर यू पुट फूड पैकेट्स, या तो फूड पैकेट्स रखो या फिर ब्लैंकेट रखो. ठीक है. सो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू विल टेक? वाटर बॉटल, फर्स्ट एड, मैच बॉक्स and 4th one I am leaving it on you. If you want blanket you can write blanket. If you want food packets you can take food packets. ठीक है. Radio, money, candle, football, the books, jewels are not important. बाकी 4 चीजें you can decide. Right? India is a country of many languages. Let's see if you know what the people of the states in this crossword puzzle speak. Okay, you have a crossword puzzle. You have a crossword puzzle and you have to tell कि कौन सा language कौन सा state पे बोल रहे हैं, right? So we'll see Odisha, Karnataka, Assam, Andhra Pradesh and Maharashtra. Okay, Odisha, Assam, Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra. First उनके लिख लेते हैं. Odisha, Odia, ODIYA, ओडिया. महाराष्ट्र, मराठी. और क्या था? कर्नाटका, कन्नड़,
ओडिया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एक और क्या था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम, ओके, असम, असमीज, असमीज, 3 नीचे केरला, मलयालम, 2, 7 तमिल, नहीं तेलुगु है, सॉरी तेलुगु, यूपी 9 उर्दू, क्या रह गया? 5 H नीचे को देखना पड़ेगा, 7 नीचे तमिल, तमिल, 2 कन्नड़ हो गया, क्या रह गया? लेट्स सी, क्या चाहिए हमें? 2 चाहिए एंड 5, 2 and 5, 2, 5 is national language and 2 is Karnataka, okay, oh 2 is Karnataka, तो कन्नड़ यहाँ आएगा, कन्नड़ा, तमिल, हिंदी, मलयालम, ओडिया, असमीज, 6 is गोवा, कोंकणी, 8 is महाराष्ट्र, मराठी, 9 is Urdu and 7 is Telugu. Complete? Done? Right. So 6 is, we'll start with 6. 6 is Goa, Konkani. 3 Kerala. Malayalam, 6, 3, 4, Assam, Assamese, 1, Orissa, Odia, फिर क्या है? 2, कर्नाटका, 2 कर्नाटका या आंध्र है? 2 कर्नाटका, ओके, कन्नड़, देन 2, 5, नेशनल लैंग्वेज, हिंदी, यूपी, उर्दू, क्या रह गया? 8, महाराष्ट्र, मराठी, कोई रह गया? 7, तमिलनाडु, तमिल एंड आंध्र प्रदेश, आंध्रा कहाँ है? 7, तमिलनाडु, ओके 7, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, हौच पौच हो गया ना, नो प्रॉब्लम। गोवा, कोंकणी, केरला, मलयालम, आसाम, असमीज, ओडिशा, ओडिया, कर्नाटका, कन्नड़ा, नेशनल लैंग्वेजेस हिंदी, यूपी उर्दू, महाराष्ट्र मराठी, तमिलनाडु तमिल, आंध्र प्रदेश तेलुगु। ठीक है, कर लिए सबने? सो while doing this, keep your pencils sharp so that you don't create any ruckus there.
नीट एंड क्लीन ही लिखना, ठीक है. सो दैट एंड्स विथ योर एक्सरसाइजेस फॉर द स्कॉलर्स मदर टंग, ठीक है. इट्स अ good story. Try to find out more Akbar Birbal stories. They are very interesting. They are funny also. You'll learn some or the other lessons from them. So try to improve your reading. You can read these things so that you improve your reading, है ना. Ask your parents, they'll help you to find out different stories. You can read them. So that was all in this chapter. We've done the chapter with the exercises, new words, meanings, everything. Please write the underlined words at least 5 times so that you learn the spellings. Writing cursive writing so that you improve your handwriting. Okay, I will meet you next time with a new story. Till then, take care. Bye.